This conference will now be recorded. So hello and welcome to all the participants for this webinar number 23 presented by Excel Basement Private Limited. And today we have a speaker, QAHIR RAJWANI. And first of all, I would like to give his introduction and then QAHIR will lead this session today. So basically QAHIR itself described as he is the project management and analytics leader, customer obsessed and behavioral science focused. So QAHIR went to Canada in 2008 and there he completed his undergraduate from University of Waterloo, and then he completed his master's in analytics from Queen's University. So far he has worked in analytics for over 8 years, and currently QAHIR is working on fostering analytics to improve customer behavior analysis at a pension plan. So QAHIR has worked for various companies, including major banks and technology startups in Canada. So currently QAHIR sits on board for IPOS and is employed in the pension industry. QAHIR has huge interest in a specialization in such areas as pricing and revenue optimization, customer segmentation and behavioral analysis, and definitely we have some memories when we used to play cricket, definitely, and after a very long time I have been engaged with QAHIR to welcome him on my platform and to express his views and experiences about the upcoming emerging field, which is data analyst and business analysis within the scope, and about the Canada and Pakistani market and his entire experience towards this topic. So QAHIR, you can start the session now. Yeah. Thank you, Rahim. Thank you so much. I'm hoping everybody can see me, and thanks for the generous introduction. I think my video for some reason keeps getting turned off, but I'm hoping everyone can hear me, so that's good. So I started my career, like, as you guys all know, like, about 12 years ago, I came to Canada and, and went to University of Waterloo, did an economics and math degree. So there are a couple of questions that I kind of told, that were kind of told to me, and I'm going to try to answer that. So one of the questions that was sent before this session, and then I'm hoping that after I kind of answer those questions and talk about opportunities, there's going to be a lot of questions that you guys may have about opportunities, whether in Canada, whether in the world, or anything like that. And I'm kind of relying on you to kind of tell me what questions those may have, and then I'll be more than happy to answer those questions. Okay, so the very first question I have is what is the importance of emerging fields of data analysts and business analysts? So how I started my career, I'll kind of go a little bit more into my own career as well, and then and kind of walk through that where I saw the importance as well and how this whole thing happened. So like about after I graduated my undergrad in 2012 from University of Waterloo, I was basically working as a reporting analyst, doing some reporting work for a major bank, and just doing kind of their performance management reporting, which you can probably see, like they would have their sales staff, they would have some targets assigned, and then they would try to meet their targets, and the targets would sometimes get revised based on economic conditions, etc., etc. And that's how the reporting started. What I realized was there was more of a need for data, but most of the banks that I worked with, or most of the companies that I knew, nobody, like, they had a massive amount of data that they were collecting, but they were not using it to make decisions. They were not using decision science. And for example, like, let me give you an example. Let's अगर आपके पास एक mortgage है, ठीक है, अब आपके पास जब वो मॉर्गेज है, उसको इसको आप एक स्टैटिस्टिकल मॉडल से रियलाइज कर सकते हो कि उसकी जो प्राइस एक कस्टमर पे करेगा, और प्राइस यानी कि इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? शुड इट बी 2.99 फॉर 5 years फिक्स्ड मॉर्गेज? इट शुड बी 1.99, और या मतलब आपको क्या वो लोन की प्राइस देने की है? और हर कस्टमर जो है वो डिफरेंट प्राइस पे करने को तैयार होता है। और आई थिंक इसकी सबसे प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट की जो सबसे अच्छी एग्जांपल जो आप नोटिस करोगे ना, वो है एयरलाइंस के अंदर। जिससे कि जब आप एक एयरप्लेन में बैठो तो कभी भी बराबर वाले से मत पूछना कि ना आपने कितने में ये टिकट खरीदी, आपकी पूरी फ्लाइट बहुत बड़ी जाएगी। तो नेवर डू दैट। बट जब आप
बेसिकली नोटिस करोगे कि एयरलाइन के अंदर हर बंदा डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे पे करके टिकट खरीद के अंदर आया होता है, क्योंकि आप रोज देखोगे टिकट की प्राइसेस चेंज हो रही होती है। कभी कभार आप सोचते हो यार मैं 4 महीने पहले टिकट लूँ, कभी कभार आप सोचते हो मैं 2 महीने पहले टिकट लूँ, कभी कभार मैं सोचता हूँ, हर बंदे की अलग अलग थ्योरी होती है। और दिस इज हाउ जस्ट प्राइसिंग रेवेन्यू मैनेजमेंट वर्क। बेसिकली एयरलाइन कंपनी की फिलोसफी ये होती है कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स चार्ज करें डिफरेंट कस्टमर्स को, जिससे हम लोग अपना हम अपना बेसिकली इनकम बढ़ा सके और जिस तरह से हम लोग अपना पूरा रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा सकें। एंड आजकल इतने एडवांस एंड अमेजिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको ये मतलब बेसिकली आपको एबिलिटी देते हैं कि आप हर कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पॉइंट चार्ज कर सको। आप कौन से टिकट्स पे देखते हो कि कौन से टिकट्स में जितनी करीब की सीट होती है परफॉर्मर से, ठीक है, वो ज्यादा प्राइसी होती है, एंड जितनी दूर होती है वो कम प्राइसी होती है। बट जरूरी नहीं कि खाली वो करीब या दूर हो, कभी कभार आप टाइम बेस्ड भी देखोगे कि जिस तरह से कॉन्सर्ट करीब वाला जाएगा वो जो पीछे वाली टिकट है वो भी बहुत प्राइसी हो जाएगी sometimes. So so this is how like pricing and revenue management works. But when we talk about data analyst, how I got into it was basically one of my friend used to work for Barack. Actually, he was one of my cousins who used to work for Barack Obama's campaign in 2012 campaign. जब Obama won. जब ओबामा ने वो कैंपेन जीती थी तो लोगों ने काफी एक पाकिस्तानी बेसिकली साइंटिस्ट था who used to run their data and analytics software and like basically their whole data analytics in the campaign. And that guy was like basically my idol because मुझे ऐसा लगता था कि यार उस बंदे ने पूरा खाली डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे टारगेटेड कैंपेन्स करके इतना अपने आप को अच्छा किया कि उसके बाद he could actually run the whole campaign that was based only on data analytics. So what they would do is like जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में ईस्ट कोस्ट होता है और वेस्ट कोस्ट होता है, ईस्ट साइड पे जैसे न्यूयॉर्क जिस तरफ आता है वो ईस्ट कोस्ट होता है, ठीक है, और वेस्ट कोस्ट पे वो कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स आते हैं, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, जहाँ पे सियाटल है, that would come under west coast. So what they did was they found कि जो west coast है कैलिफोर्निया, it's known for startups, ठीक है, वहाँ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होती हैं, जैसे फेसबुक वहाँ पे है, there are a lot of other major companies like Google का headquarters वहाँ पर है, and most of these startups have rich spouses, ठीक है, तो and they are willing to spend like $50,000-$70,000. So they use data analytics to see कि ना अगर हमें उनसे फंड रेजिंग करनी हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत मेजर एक्टर था, उसके घर पे एक पार्टी रखी, एंड उसके अंदर आने की प्राइस दे पुट लाइक $70,000 or $80,000. एंड यूजुअली जो ये रिच एंटरप्रेन्योर्स उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, दे वुड पे एनीथिंग टू लाइक गो फॉर दैट एक्टर. And then they basically paid 70,000-80,000, or उस एक particular campaign event से they raised over $1 million. So Barack Obama actually went to that particular campaign, and and they raised a lot of money for Barack Obama. But then on East Coast they realized that Beyonce was really popular, so they did a whole concert with Beyonce for fundraising. Or Beyonce and Barack Obama used to get along really well, and that helped bring like ton of fundraising dollars. ठीक है, और यहाँ की जो कैंपेन्स है वो अक्सर फंड रेजिंग पे चलती है, तो कभी कभार आपको ना डिफरेंट लोगों से पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करनी पड़ती है. एंड दैट्स हाउ आई बेसिकली स्टार्टेड कमिंग टू डेटा एनालिस्ट, basically I would say data analyst, data science roles. So if you guys want to go into data analyst and data science role, there are different ways to get. And initially मैं just kind of आपको excite कर रहा था कि career कैसा है, क्या art of possibility है, but the goal is कि मैं आपको बताऊँ भी कि how can you get here and practice data science and analyst, and depending on आप कौन से careers हो. So data analysis is of course like बहुत emerging field है. Hiring जो है मैंने जब तक notice किया last 5-7 years से, जब से मैंने अपना masters किया है, हर साल hiring improve होती जा रही है, increase होती जा रही है. मेरी company जैसे जहाँ मैं अभी current काम करता हूँ वहाँ पे when I joined there were only 5 people who were doing data science and analytics. And next और अभी मैं job descriptions बना रहा हूँ and we are hiring 3 more. और the whole organization is realizing कि ना कितना increase हो रही है, कितनी जरूरत है इस तरह के लोगों की, internally बहुत appetite है to build and get the skill set, as well as how do we basically do more in-house analysis on different types of benefits that we offer as a pension company. So there's a lot of things.
when I talk about data science, there are a couple of ways to go there. You have to be really good in, um, first of all, you have to have a good analytical mindset. I think that's really important. But another thing that's a good trade for data science and analytics is communication skills. You would find just like you'll be surprised कि मैं कितने सारे लोगों को ऑफिस में देखता हूँ जो kind of computer science backgrounds होते हैं और they can code well, which is good, but they cannot relate to the business really well. इसकी एग्जांपल मेरी पुरानी कंपनी में मेरे एक बॉस देता था कि एक बंदा था वो एक बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट था. ठीक है, ही वेंट एंड ही यूज्ड टू वर्क इन साइलोज. ठीक है, यानी वो अकेले काम करता था ज्यादा. तो उसने अकेले काम किया और उसने अचानक से अपॉर्चुनिटी निकाली कि जिससे वो कंपनी $250 million बना सकती है. ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज कि लाइक आप अकेले कॉर्नर में बैठ के एक अचानक से मॉडल आप बना लोगे कि यार मैं अचानक से इस कंपनी का रेवेन्यू $250 million से इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आपने बिजनेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. ठीक है, ना ही आपने किसी से बिजनेस में बात करी. So the downside of that is that the business always have priorities कि उनके पास next 6 months तक उनको ये projects करने हैं. ठीक है, उनको next 1 year तक उनकी ये priorities होती हैं downside. So you have to work really closely with them. ठीक है, अगर आप silos पे काम करोगे तो आपका business आप 250 से million से लेके $1 billion की भी opportunity लेकर आओ, जब तक वो business के vision पे set नहीं करती है, ठीक है, तब तक कोई फायदा नहीं है. In business visions can vary, जैसे एक बैंक का vision हो सकता है कि हम लोग लोन्स जो अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग अपना मार्केट में कैपिटलाइज करें और हम लोग हमारा जो मार्केट में शेयर है, ठीक है, वो अभी 25% उसको 60% लेकर आए. ठीक है, इट मे नॉट बी प्रॉफिटेबल बट वो उनका बिजनेस है, या उनका बिजनेस गोल था, क्योंकि दे मस्ट बी थिंकिंग समथिंग डाउन द लाइन. तो यू हैव टू इंटरेक्ट वेरी क्लोजली विद द बिजनेस. यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ना बिजनेस के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन हो. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अब इसके लिए what kind of softwares can you guys learn? So पहली बात तो ये कि there's a lot of information out there. There's a lot of technologies out there. There's a lot of university programs. मेरा जैसे आपने you have seen my career path. I did my undergrad from Waterloo. So I had a math and economics degree where I kind of had taken some math courses, some economics courses. So मेरे पास थोड़ा business side भी था and मेरे पास mathematical hardcore just regression modeling karna and stuff like that. I had that kind of side of the world as well. Then I did my masters. ठीक है, और उस masters जो मैंने क्वीन से किया उसके अंदर मुझे और स्पेशलाइजेशन स्किल्स मिल गए, जैसे कि प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट. ठीक है, फिर मार्केटिंग एनालिटिक्स के हम लोग मार्केटिंग में कैसे थिंग्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं. उसके अलावा क्या बोलते हैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स, जैसे सप्लाई चेन को हम किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिटिक्स, जैसे हम लोग अपनी लाइक व्हिच विल बी प्रोबब्ली मोर क्लोजली रिलेटेड टू सीएफए प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग, कि ना आप अपने आपको रिस्क मैनेजमेंट में किस तरह से अच्छा बना सकते हो. दोज आर ऑल द थिंग्स जो लाइक आप एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हो. So there's a couple of career paths, I think, if you want to come to Canada or even if you want to kind of practice back home. There are a couple of courses that, of course, you can take for free. तो आप कोर्सेरा पे जाओगे तो आपको बहुत सारे 4 कोर्सेज मिलेंगे. खान अकेडमी पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे डेटा साइंस एनालिटिक्स के अंदर, एज फार एज यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो जैसे कि आप अपना अगर प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट में कोर्सेज देखना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बट आई वुड से कि उससे पहले यू आर बेटर ऑफ टेकिंग सम स्टैटिस्टिकल कोर्सेज, दैट वुड हेल्प. बट अगर इफ यू वांट टू एक्चुअली परस्यू लाइक एन एजुकेशन, देन काइंड ऑफ कनाडा के अंदर अभी बहुत सारी मास्टर्स प्रोग्राम है जो ऑफर हो रहे हैं. Some of them are online, so if you don't want to come to Canada, आप online ले सकते हो. और उसमें मतलब online का format ऐसा होता है कि there are still in-person classes, you need to do interactions and you need to build projects together. But if you want to come to Canada, doing those masters can pay off you a lot. They're pretty expensive, I would say, between 60 to 80,000 Canadian dollars. Like इतना budget आपके पास होना चाहिए. Plus, I would say, आपका रहने का और सारे खर्चे मिला के you're expecting a bill about $100,000. तो अगर आपके पास बजट है कि आप $100,000 तक कर सकते हो, then I would say come to Canada. But another thing, the good thing is that you'll very likely get paid off in like 2 years. जब आप 100,000 करके निकलते हो, your starting salaries are around $75,000. तो अब 1.5 year के अंदर you expect कि आपका payout हो जाएगा. And that's going to be a building store. So like आप जितना मतलब
मतलब अब अर्ली एज पे आके जितना लोअर लेवल पे ज्वाइन करके आप जैसा सब अपने करियर को फ्लरिश कर सकते हो, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स दैट करियर विल फ्लरिश. इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपको सिखाएंगे इस मास्टर्स प्रोग्राम में, या फिर आप खुद भी सीख सकते हो. एक जो बहुत जरूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है. I think that's one of the most cutting edge data science language that is being used today. R would be another one. R में थोड़े से issues होते हैं, लेकिन it's still regarded as one of the most important languages to learn. So Python and R हो गए. फिर there's one language that's used a lot these days, which is SQL. So you need to make sure that SQL is actually relatively more easier than Python and R, I find. Or one thing you'll notice is that most of the companies जो आपको employ करती हैं, ठीक है, they have like more, like I would say old infrastructure or Microsoft based infrastructure. You know, और वो जो infrastructure है उसमें SQL languages ज़्यादा use होती हैं than Python and R, because the database programmers जो हैं SQL ज़्यादा use करते हैं. But let me tell you another thing. What you learn from Excel basements, such as like, you know, Microsoft Excel or Power BI, I don't see कि उनकी डिमांड कभी भी कम होगी. अगर Microsoft Excel को स्टैंड अलोन देखा जाए, ठीक है, as a technology, you know, it was sometime launched in 1990s, ठीक है, और इस वक्त most widely availably used हो रही है मतलब दुनिया के अंदर. It's like Microsoft की one of the highest revenue generating technology we had. At the same time, Excel is like used pretty much everywhere you can imagine across the world, I would say. ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे. So you need to learn Microsoft Excel, you need to learn Power BI, because आप अच्छे से अच्छा analysis लेकर कर आ जाओ SQL, Python या कहीं पे भी. And if you can't present it with pretty looking pictures which can actually talk the story, which, you know, एक storytelling करके दिखाएं जिसमें आप बता सको कि यार आपके business को यूं फायदा होगा, you know, like you have to make a story about every problem that you face in company. You know, जब आप वो करके दिखा दो तो then that's where the company sees your value. Or that's where your management will see the value कि आप ये data science analytics के अंदर ये एक value लेकर आते हो. Okay, one of the questions I was asked is how organizations can take benefit from these professionals. So, in all reality, you know, the biggest benefit will come on organizational mindset. I've worked in companies जहाँ पे analytics को बिल्कुल value नहीं मिलती थी, ठीक है, and you know the CEOs और जो उनकी ये leadership होती थी जब उनको value नहीं करते थे, you know, one thing I realized कि they used to regret it later on. You know, या तो later on वहाँ से fired हो जाते थे, ठीक है, या फिर वो लोग competition के behind रह जाते थे, क्योंकि you know there's a good chance कि उनका competitor वो data collect कर रहा है, उस data को अच्छी तरह से leverage कर रहा है, ठीक है, उनकी मतलब you know for example आपकी कोई भी छोटी कंपनी है जो आपको पार्ट्स बेचते हो है कुछ भी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पार्ट्स बेचते हो तो लोग जो है ना किस प्राइस पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, और किस प्राइस पॉइंट पे डिक्लाइन करते हैं. वो डेटा कभी कभार आप यूज ही नहीं करते क्योंकि आप सिस्टम्स में रखते नहीं है, सीआरएम्स, आपके जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो डेटा नहीं रखते कि यार ये अगर ये प्राइस पॉइंट हम लोग रखे होते तो हमारे पास शायद ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है, या फिर ये प्राइस पॉइंट रखी होती तो हमारे पास थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर होता, ये किस प्राइस पॉइंट पे हमें मना करना है ताकि आप अपनी प्राइस पॉइंट्स को एडजस्ट करो ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, यू नो, डिपेंडिंग कि आप रेवेन्यू प्ले पे हो या प्रॉफिटेबिलिटी प्ले पे हो, ठीक है, या किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को क्लोजली मॉनिटर करो ताकि अपनी क्लोज कॉस्ट को देखो, या फिर किस तरह से यू नो लाइक आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे किस तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके जो मार्केटिंग के बजट जा रहे हैं, ठीक है, इज इट ब्रिंगिंग यू इनफ रेवेन्यू, ठीक है, अगर आप $1 million मार्केटिंग में डाल रहे हो, ठीक है, और आपको खाली $5 लाख सेल्स मिल रही है, दैट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मनी देन, ठीक है, तो वो सारी चीजें मॉनिटर करनी होती हैं हर कंपनी को, और जो कंपनीज ये मॉनिटर नहीं करती हैं इवेंचुअली दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो अपने जिनके पास एनालिटिक्स प्रोग्राम्स नहीं है जिन कंपनीज के अंदर, यू नो देयर आई कैन बेट यू देयर लाइक ऑल शॉर्ट लिव्ड बिकॉज उनका कंपेटिटर जो है, ठीक है, वो उनका बेसिकली यू नो दे आर ईटिंग अवे देयर बिजनेसेस बिकॉज उनको पता है कि वो क्या प्राइस पॉइंट ऑफर करे, कभी कभार वो अगर लॉसेस भी लेने हो तो किस पॉइंट पर लॉस लें ताकि वो कस्टमर अपना बना लें, ठीक है, और उसके बाद you know they can actually benefit from that. Another thing that's really important is you need to understand different tactics in like customer behavior के ऊपर, ठीक है, जो लोगों को अपने कस्टमर्स को ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करना होता है. कभी कभार जब आपका एक चीज आपको बताऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉयल्टी डजंट प्ले. पाकिस्तान के अंदर मैंने ये बहुत चीज नोटिस करी है कि लोग है ना बहुत लॉयल होते हैं, ये मेरा मैकेनिक है यार, ये बड़ा अच्छा मैकेनिक है, मैं इसके पास 6 महीने से जा रहा हूँ, आई एम गोना गो विद देम.
बाय द वे दिस इज अ इंटरेस्टिंग एनालिटिक्स ऑब्जर्वेशन, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, लोग अक्सर वहीं जाते हैं। ठीक है, या फिर वो कहेंगे यार यही मेरा डेंटिस्ट है, यही मैं इसी के पास जाऊंगा, हमेशा से इसके पास जा रहा हूँ। अब डेंटिस्ट इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग बिकॉज उनके पास आपकी हिस्ट्री होती है एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जब आप कोई मैकेनिक की बात कर रहे हो या आपको अप्लायंसेस लेने और आप बोलते हैं यार मैं इसी बंदे के पास जाऊंगा, मुझे हमेशा अच्छा रेट देता है। ठीक है, दैट डजंट हेल्प। यू नीड टू गो आउट और आपको जरूर आप इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जाके शॉप करो, क्योंकि आप रियलाइज करोगे जो बंदा आपको जानता होगा ना वही आपको सबसे ज्यादा लूटेगा, क्योंकि ना यही उनका बिजनेस होता है। ठीक है, और इट्स इंटरेस्टिंग कि आपके जो दुकानदार हैं वो कभी कभार एनालिटिक्स को यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है ये रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप उसको 2,000 ज्यादा दे दोगे। लेकिन कभी कभार आप जो दूसरे बंदे पे चांस लेते हो, ठीक है, तो आपको 2,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे आपका फायदा ये होगा कि वो बंदा आपको, क्योंकि हमेशा जो आपका नया कस्टमर होता है आप उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हो। इंडिया में जैसे कहते हैं उसको अपना गॉड ट्रीट करते हो जो आपका नया कस्टमर होता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप हमेशा लूटने की कोशिश करते हो, क्योंकि फिर आप उससे ना बोल सकते हैं यार कि अपना क्या बोलते हैं यार आपकी गाड़ी में ये भी मसला है, आपकी गाड़ी में ये भी मसला है, आप आज जाना अगली बार ठीक करवाने के लिए, तो आप उसके पास जाओगे क्योंकि आपकी गाड़ी में मसला है। आप कभी वो गाड़ी जाके दूसरे मैकेनिक को दिखा बोलोगे यार ये मसला है भी या नहीं, वेरी लाइकली नहीं होगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी होता है कि काफी लाइक यहाँ पे बैंक सारा टाइम ऐसा करती हैं, जब आप नए मॉर्गेज रेट्स लेके एक नई बैंक में जाते हो, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके मॉर्गेज रेट्स आपको सबसे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जब आप अपनी एग्जिस्टिंग बैंक के पास जाओगे और बोलोगे यार कि यार मेरे रेन्यूएबल आ रहे हैं, मुझे कोई अच्छा रेट दे दो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बैंक जो है ना आपको बहुत अच्छा रेट देगी। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ना यहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स आपको लॉयल्टी के पॉइंट्स मिलता है, समटाइम्स लॉयल्टी डजंट पे। So you need to realize कि और इससे सब एनालिटिक्स प्ले करता है कि जो आपको फिगर आउट करता है कि यार मैं अपने करंट कस्टमर को है ना खाली अगर 20 मतलब 20 बेसिस पॉइंट्स या थोड़ा सा ज्यादा पे लोन दे दूंगा, तो वो ना वो फिर भी अगर वो ज्यादा प्राइस भी होगी मार्केट से वो ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इसी ब्रांच में आता है, मेरा दोस्त है। और मैं अपनी फैमिलीज में काफी लोगों को जानता हूँ स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो एक ही बैंक ब्रांच के साथ बैंक करते हैं, वो कभी दूसरी ब्रांच के पास नहीं जाएंगे। लोन लेना होगा तो ऐसा नहीं कि डिफरेंट बैंक से जाके ट्राई करें और 6-8 बैंकों में शॉप करें और उसके बाद डिसाइड करें कि यार मुझे बेस्ट रेट कहाँ से मिल रहा है, बेस्ट टर्म्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो मैं वहां से लोन लूँ। सो दैट्स वाई लाइक ये मैंने नोटिस किया कि लोग वहां पे जाके एक ही मैनेजर के साथ की बातचीत बनती है, तो मैनेजर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट रखता है, फिर उसको फ्यूचर में अगर कुछ चाहिए भी हो तो उसको बिजनेस उसको क्या बोलते हैं प्राइस पॉइंट इतना अच्छा नहीं देगा, लेकिन वो बंदा वहीं टिका रहेगा क्योंकि ही इज लाइक वो मैनेजर अच्छा है, मुझे चाय पिलाता है जब भी मैं चाहता हूँ। बट ये अलग बात है कि आपसे 2-3 हज़ार रुपए ले लेता है एक 20 रुपए की चाय के लिए। एंड दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग जो मैं नोटिस किया कि वहाँ के हमारे जो कस्टमर बिहेवियर्स हैं वो ऐसे होते हैं। मैंने आपको बीआई टूल्स के बारे में बताया कि ना लाइक पावर बीआई इज रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक पावर बीआई शुड बी वन थिंग जो यू शुड कंटिन्यू learning. Power BI is a really important tool. Tableau is another one. There's a lot of new tools that are coming out every day. Okay, but I think Power BI is like kind of Microsoft phones. A lot of companies kind of go with Microsoft, but then like Microsoft technologies are just really common across. But then there's a lot of tools from Amazon. There's like Tableau, जो Salesforce ने भी खरीद लिया है, or like, and a lot of people are using Salesforce as a CRM system, which is also really good. और फिर थोड़े और tools हैं जैसे Pantaho है, और फिर click view है, इस तरह से भी softwares हैं that you can learn. But I think if you know 1 or 2 languages, it's 1 or 2 softwares, and it would be enough कि आप दूसरे softwares भी learn कर सकते हो for BI. or programming languages I already told you. One of the questions that was asked is how data analysts or business analysts can apply for Canada. So when we talk about applying to Canada, there are a couple of ways that you can talk about. So Canada के अंदर क्या बोलते हैं, या तो आप वहां से अंडरग्रेड करो कोई टेक्निकल फील्ड के अंदर या बिजनेस फील्ड के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे एक मास्टर्स कर लो. आई थिंक जस्ट बाय द वे अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई फाउंड के जो पाकिस्तान से लोग आते हैं या इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे, या जो इंटरनेशनली आते हैं, if they get even one education from Canada, they're more successful in their careers. क्या होता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा अच्छा होता है, उनको यहाँ के लोगों से लाइक इंटरेक्ट करना ज्यादा इजीली आता है, तो वो डर डर के नहीं रहते, वो ज्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो अपने करियर पर्सपेक्टिव होता है. Now again, that's expensive proportion because यहाँ की fees बहुत high है, but of course salaries pay off. But that's one way to succeed. The second is like आप वहाँ पे पाकिस्तान में अंडरग्रेड करो और पाकिस्तान से ही कोई मास्टर्स करो in economics or something.
Then you come here and get your immigration through express entry. And then जब आप यहाँ पे आ जाओ तो उसके बाद you take some courses in analytics, or you do your masters or some kind of a particular degree in analytics, and then go from there to do basically practice this. कुछ लोग होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे जो वहां से ही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख कर आ जाएंगे, हर चीज कर लेंगे, एंड दे मे then they may not even need any education here because उनके पास वहाँ पे enough experience होगा, उन्होंने data science का काफी काम किया हुआ होगा. For them it's easier to apply. So of course there are people who would be like that. So we can always, so I think, there's always like different pathways to come. But if you guys are interested in any particular pathway, and if you guys have heard about anything, please let me know, or I'm happy to expand on that. Okay, so one of the last questions that I have, and then I'll open up the floor and I'll see if Raheem has any questions, if anything that I've missed. So my experience as an analyst. So let me tell you a little more about my career, which I may have not. So I did my master's. My master's करने के बाद एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था जो प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट करती थी बैंक्स के लिए. तो वहाँ पे लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, मॉर्गेजेस और उसकी प्राइसिंग क्या करते थे. तो हम लोग वहाँ पे कस्टमर को सेगमेंट करते थे और बेस्ड ऑन उनके क्रेडिट स्कोर्स जो होते थे, यहाँ पे जैसे आप आई हर्ड कि पाकिस्तान में भी क्रेडिट स्कोर्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट स्कोरिंग कंपनीज होती हैं जो आपको अपनी, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस जो आपको अपना क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छा रखना होता है. Basically what credit score does is it tells an organization how on time have you been paying your loans, or your bills. So for example, आपका इंटरनेट का बिल है, आपका सेल फोन का बिल है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, डिफरेंट बिल्स, आपकी मॉर्गेज की पेमेंट्स है, आप कितना रेगुलरली कर रहे हो. अगर आप ज्यादा रेगुलरली कर रहे हो और आपकी इनकम लेवल्स अच्छी हैं और सब कुछ ठीक है, तो बेस्ड ऑन दोस क्रेडिट स्कोर्स देयर इज अ गुड चांस कि आपको एक तो हायर लेवल ऑफ लोन्स मिल सकते हैं, और दूसरी बात आपको इंटरेस्ट रेट्स बहुत कंपैरेटिव मिल सकते हैं. तो दैट्स तो उस पे हम लोग उसके बेसिस पे देयर इज अ लॉट ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन जो आप करते हो. अब कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे होती है, वन ऑफ द थिंग्स इसके यू कैन फिगर आउट कि लोग अपने करियर स्टेजेस पे कहाँ हैं, लोग अपने लाइफ गोल्स में कहाँ हैं, या फिर इट कैन बी बेस्ड ऑन यंगर पीपल या फ्रेश ग्रेजुएट्स हो गए, तो दैट्स वन सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स. एक हो गए सीनियर्स हो गए, या फिर एक हो सकते हैं जो बिटवीन एजेस एंड 30 एंड 70 या 60 हो, who are making over a certain amount and and are making under certain amount. उनके behaviors बहुत different होंगे, और ये हम पाकिस्तान में भी नोटिस करते हैं. जैसे कि अगर कोई डिफेंस में रह रहा हो या कोई क्लिफ्टन में रह रहा हो जिसकी इनकम अच्छी खासी हो, वो जाके कोई अच्छे ग्रोसरी स्टोर में शॉप करेगा. बाकी लोग जाके शायद थोड़े ठेले पे करेंगे. ठीक है, तो वी नो कि उनके कस्टमर बिहेवियर क्या होंगे बेस्ड ऑन उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे उनकी इनकम लेवल्स, उनके जेंडर, उनकी हैबिट्स, उस पर काफी चीजें होती हैं. तो आप उस पर डिस्क्रिमिनेट करते हो सॉर्ट ऑफ टू सी कि आप किस तरह से बेनिफिट करो. तो जैसे कि अगर आप कोई चीज आगाज को बेच रहे हो या कोई अच्छे मेजर ग्रोसरी स्टोर को बेच रहे हो, ठीक है, यू विल बी चार्जिंग अ लॉट. एक चीज जो आप कहीं लोअर लेवल्स के एरियाज में बेच रहे हो, ठीक है, कि आप वहां पे ज्यादा चार्ज करोगे तो कोई खरीदने नहीं आएगा, तो यू हैव टू पुट योर प्राइस पॉइंट अ लिटिल डाउन. तो आप उस तरह से वो करते हो. So that's how I basically started my career, जहाँ पे जहाँ मैंने प्राइसिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट स्टार्ट किया. उसके बाद मैं एक बैंक के अंदर गया और वहाँ पर हम लोग, एंड दिस वाज अ वेरी डिफरेंट रोल, जो जहाँ पे मैं फ्रॉड का काम करता था, फ्रॉड डिटेक्शन. और वहाँ पे उनके जो वी वर एक्सपेक्ट बेसिकली देयर वाज अ थ्योरी कि जो उनके फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो अपना कमीशन बनाने के लिए कुछ फ्रॉड कर रहे हैं. तो वी बेसिकली बिल्ड अ स्टैटिस्टिकल मॉडल उनके बिहेवियर्स पे to find and that model was like isolation forest जो कि आउटलायर डिटेक्शन करता है. तो आपको पता है कि आपके स्टैटिस्टिकल डेटा में कभी कभार आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, और वो आउटलायर्स जो है उनके कभी कभार क्लस्टर्स बन सकते हैं. तो हम उनके क्लस्टर्स से किस तरह से डिटेक्ट करें और फिर क्या बोलते हैं उसको हम जितने भी क्लस्टर्स उनको कैसे डिटेक्ट करें और फिर उनकी इंडिविजुअल बिहेवियर्स को इन्वेस्टिगेट करें. So we would use statistics to do that kind of behavior segmentation as well. उसके बाद I used to work for a technology startup. उस technology startup के अंदर basically my role was kind of head of growth. तो उनकी एक app थी and my goal was कि उस app में को हम लोग किस तरह से improve कर सकते हैं या फिर कैसे उनके more customers बढ़ा सकते हैं.
I would come up with different strategies. So like, my marketing team जो होगी वो different types of communication वो लिखेगी. तो मैं A/B testing बहुत करता था कि ना okay, कुछ customers को एक particular type of message भेजा और कुछ लोगों को different type of message भेजा. And then we would see कि कौन से message ज़्यादा successful था जिसमें लोगों ने app खोली. ठीक है, फिर अगर हमें कोई डील ऑफर करनी है जैसे कि इफ यू रेफर अ फ्रेंड, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक व्हाट्सएप का ऐप है और आप चाहते हो कि बाकी लोग भी आए और मैं उनको बोलूँ कि अगर आप रेफर कर दो तो हम आपको $1 ऑफ देंगे, या $1 ऐसे एज ए गिफ्ट ऑर्डर करेंगे देंगे या समथिंग लाइक दैट. तो हम किस तरह से वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट से प्ले कर सकते हैं जिससे ना मतलब बाकी लोग मोटिवेट हो अपने दोस्तों को रेफर करने में वो ऐप को. तो इस तरह की मैं स्ट्रैटेजीज करता था. और फिर इंटरनल रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए जिससे ना लाइक लोग वो ऐप जो थी इसमें ऐसा था कि लोग सर्विस की क्वेश्चन आंसर्स करते थे जो मार्केटिंग सर्विस थे और उसके बेस पे उनको पैसे मिलते थे. तो वन ऑफ माई गोल वाज कहना कि हम लोग उस ऐप में क्या करें जिससे ना लोग ज्यादा एंगेज्ड हों, वो ज्यादा पैसे बनाए, क्योंकि द मोर मनी दे मेक बाय आंसरिंग क्वेश्चंस द मोर मनी वी मेक. हम ऐसा था कि अगर हमारे कस्टमर ज्यादा सर्विस फिल करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू दैट. तो उसमें मैं पूरा बिहेवियर और बेसिकली बिहेवियर सेगमेंटेशन करते थे हम लोग और मेक श्योर करते थे कि हम किस तरह के लोगों को रोज टारगेट करें, किस तरह के लोगों को वीकली टारगेट करें, किस तरह के लोगों को मंथली टारगेट करें और उसके बेसिस पे हम लोग एक एक्शन लेते थे. इन माई करंट रोल हम लोग डीपर एनालिसिस कर रहे हैं एक पेंशन इंडस्ट्री के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स जो ऑफर होते हैं और हम लोग उसको देख रहे हैं कि and this is more of a more technical role because इसमें kind of काफी actuarial factors भी आते हैं. How do we make sure कि actual like जो benefits offer होते हैं, ठीक है, are they prevailed और operationally हमारे लिए beneficial हैं to deliver those or not. क्योंकि अक्सर जब actual लोग पूरी कंपनी का वो देखते हैं, they forget कि other price points भी होती हैं जैसे कि operational efficiencies होती हैं, ठीक है, उसको डिलीवर करने की डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, ठीक है, मे बी वो इतना पॉपुलर प्रोग्राम ना हो, बाकी काफी उसका अपटेक ना हो, मतलब वो एक चीज ऑफर कर रहे हैं बट उसका इतना अपटेक नहीं है, तो इज इट वर्थ टू ऑफर और नॉट. तो वो सारे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं which makes it not that worthy. So and that's how I'm kind of currently involved in my own role right now, and that's all about me. So I'm gonna see if Raheem has any questions that I may have missed, and we can go from there. All right, Kahir, thank you so much. I have two questions and then the floor will be open for the participants if anyone have the question. So last two questions from my side is as we know that the COVID has changed overall scenario of different kind of jobs. तो यहाँ पर कोविड की सिचुएशन में what do you think that still this kind of field is emerging and boom and we have a lot of demand for the business and data analyst because we know that data is everywhere and data is a new oil. So still when we have a COVID, so what do you think how the paradigms have been changing towards the job to the freelancing work of business and data analysis? So this is one of my first question, and then my last question is that in Pakistan still we have organizations who have certain departments like innovation department, financial inclusion department, and we have the analytics people and managers working, but pretty much they are emerging, not much mature. And if we see the paradigm of different universities in Pakistan, we don't have very much a strong curriculum regarding the data science. Still it's emerging but not at much level. So what do you recommend, which kind of data science course or data analytics online course other than Coursera we can pursue to make ourselves strong on our resume? No, thank you, Raheem. Those are actually really good questions. The very first question, let me start with your very first one. So, COVID has changed the world a lot. As COVID has changed a lot of world, one thing we're going to realize is that there's going to be a lot of new patterns or new emerging trends that's going to come. And it's going to be up to data science and analytics people to kind of identify those trends and then how do they kind of, be, जो analytics present करे अपनी company के अंदर जिसके through है ना उनकी company इसको benefit कर सके. So one of the trends like that we are noticing in Western world is online shopping, which I'm pretty sure कि Pakistan में भी काफी common हो रही है कि online shopping दराज आ गया है वहाँ पे और काफी चीजें.
यहाँ पर एक कंपनी थी जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है शॉपिफाई के नाम से, जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है जिससे कोई भी अपना सॉफ्टवेयर कुछ भी अपनी मतलब चीज ऑनलाइन बेचनी हो, आप अपना ऑनलाइन स्टोर विद इन फ्यू मिनट्स बना सकते हो। उस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रेजीली ऊपर गया है, ठीक है। और उसमें ना आपको एनालिटिक्स बहुत यूज करनी थी कि आप चाहे ऑनलाइन डिजिटल शॉपिंग हो जो भी, तो आप ट्रेंड्स फिगर आउट करते हो यूजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स, ठीक है। और इफ एनीथिंग आई थिंक एनालिटिक्स डिमांड इज गोइंग अप बिकॉज आई एम नोटिसिंग कि काफी लोग जो ले ऑफ हुए थे हमारे यहाँ, ठीक है, उनको वेरी लाइकली दोबारा जॉब्स मिल गई हैं, ठीक है। और हायरिंग हो रही है हमारे डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि हमने मेरी कंपनी ने खुद ये फिगर आउट किया कि ना इन पैंडेमिक वी नीड एक्चुअली नॉट लेस मोर पीपल इन डेटा साइंस एनालिटिक्स, ठीक है। तो वी आर हायरिंग मोर, आई नो लॉट ऑफ अदर कंपनीज आर। और ये जॉब ऐसी जॉब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी ऑन ऑफिस, यू कैन you need to have good interaction skills, you need to have good software skills, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो, you can pretty much do it from home, ठीक है। तो डेटा साइंस और एनालिटिक्स if anything डिमांड बढ़ी, क्योंकि and there's a lot deeper analysis being done as well at the same time कि कोविड ने किस तरह से कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज किए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो आप पहले बाय करते थे आप अभी नहीं बाय करते हो, तो लाइक हाउ डू यू मेक श्योर कि आप वो एनालिटिक्स के साथ आइडेंटिफाई करो कि वो चीजें जो आप बाय नहीं करते थे, तो आप उसके किस तरह से डिफरेंट टाइप की क्या डिमांड्स हैं, जो पैटर्न्स जो बढ़ रही हैं। जैसे एक और पैटर्न जो बहुत बढ़ गया वो है ऑनलाइन हेल्थ क्लिनिक्स का, ठीक है। अभी क्लिनिक्स जो है वो आपके डॉक्टर्स हैं, वो आपको बाय फोन आपको देखते हैं कि क्या मसला है एंड टेली हेल्थ कहते हैं इसको। Actually my dad had some kind of issue, with one of his, I think उनके stomach में कुछ issue हो रहा था, basically he went on a cell phone app, ठीक है। उसमें हम लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नंबर डाला और विद इन मिनट्स एक डॉक्टर आ गया जिसने लिटरली मेरे डैड को बोला, उसमें डैड ने अपना प्रॉब्लम बताया, उसने बोला हाँ ओके आई थिंक दिस इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। उसने फॉरन एक फार्मेसी को वो क्या अपना क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। और हम लोगों ने लिटरली जाके वहाँ फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन पिक कर लिया, लेकिन इट वाज सो एफर्टलेस, यू कुडंट इवन इमेजिन। मेरे डैड को जो 3 दिन से पेन हो रहा था, मेरे डैड को बोला यार आपका 1 घंटे का काम था, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप घर से ही आप खाली आपने दिखा दिया, 5 मिनट का 10 मिनट का अपॉइंटमेंट था, और हम लोगों ने विद इन 1 घंटा हमें प्रिस्क्रिप्शन भी मिल गया और मेरे डैड को वो मेडिसिन इतनी जल्दी मिल गई। So like the technology is like advancing in these areas. So like इन areas में बहुत deeper analytics और उनकी जरूरत पड़ेगी। So make sure कि you are kind of open to experiencing those new areas as well, क्योंकि sometimes जो traditional areas होते हैं ना, जैसे finance होता है, जैसे telecommunication होता है, sometimes वहाँ पे इतनी opportunities नहीं मिलेंगी जितनी आपको new and upcoming areas में opportunities मिलेंगी, जैसे online shopping हो गई, tele health हो गया। You need to keep exploring in those areas because I think those are, our supply chain will be one of the biggest focus जहाँ heavily analytics use होगा, क्योंकि जब ये pandemic hit हुआ, ठीक है, one of the biggest shortages जो countries ने realize की was of PPE, which is your personal protective equipment. So like up now countries are redebating the supply chain. They don't want to go as far as China to rely on important products like PPE. They want to understand कि वो अपना supply chain किस तरह से localize करें, मतलब क्या चीज ऐसे करें कि जो healthcare की important चीजें वो locally build करें. So I think that's gonna change a lot. So supply chain is gonna also play like a very big role. So that's I think something that I would say I would say yeah, like COVID-19 if anything will actually improve the use of analytics. Now talking about your second question, Rahim, एक जो आपका second question था about how there's not a lot of maturity in first of all use of analytics in Pakistan. And the second thing is कि किस तरह से आप कौन से मतलब tools use कर सकते हो, किस तरह से अपनी degrees acquire कर सकते हो other than Coursera and those kind of things. So पहली बात है कि like I know कि adoption होने में time लगता है because first of all आपको local mentality change करनी होती है leadership की कि ना वो data analytics को ज़्यादा use कर सके। एक analytics department जो hire हो गया या बन गया हो, लेकिन अगर वो silos में काम कर रहा होगा, और एक और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर बैंक में इतनी सीनियर लीडरशिप नहीं जिन्होंने डेटा एनालिटिक्स को पहले कभी लेवरेज किया हो, तो उनके लिए रियली हार्ड होता है। लाइक अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने डेटा एनालिटिक्स को लेवरेज किया डेली बेसिस पे, तो उनको इजी होता है अंडरस्टैंड करना कि यार ओके दिस इज हाउ आई हैव लेवरेज डेटा एनालिटिक्स आई नो। अब उनके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा कि लाइक ओके इफ यू कम अप विद अ न्यू आइडिया, बताओ डेटा क्या है, सपोर्ट क्या करता है, ठीक है। लाइक यहाँ की कंपनीज का फॉरेन वही होगा इंट्यूशन, जो आई कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में इतना नहीं है।
एंड उसके लिए कभी कभार जो डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको केस स्टडीज पढ़नी होंगी बाहर की के लाइक डेटा एनालिटिक्स कहाँ पे यूज हुआ कैसे हुआ देयर इज लॉट ऑफ दीज मैगजीन्स दैट यू कैन फाइंड ऑनलाइन जहाँ पे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इज वन ऑफ देम जिसपे आपको इजीली पता चलेगा कि किस तरह से कुछ कंपनीज ने डेटा एनालिटिक्स यूज करके अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया या अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च की या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प हुई ठीक है तो वो सारी चीजें आपको बाहर इजीली मिल जाएंगी and I would encourage you, read those kind of things, read Business Insider, मैं CNBC बहुत देखता हूँ, that's one of the like things to look into. The Economist is another one that is really helpful जहाँ पे कभी कभार case studies आती हैं, but Harvard Business Review is of course one of the best ones I would say कि जिससे आपको पता चल जाएगा. फिर when it comes to, like think about talking about courses जो available है तो Coursera और Khan Academies are one of the best ones जहाँ पे मुझे लगता है कि वही कोर्सेज जो मैंने अपने मास्टर्स में किए हैं वो एग्जैक्ट कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है सो आई थिंक बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से कोर्सेज ले रहे हो ठीक है जैसे MIT में एक मार्केटिंग एनालिटिक्स पे कोर्स है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो मार्केटिंग एनालिटिक्स का कोर्स आप कैसे ले सकते हो या उस पर कैसे बेनिफिट कर सकते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न केस स्टडीज ऑन दैट फिर एक होता है जैसे प्राइसिंग एंड रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई कोर्स है ठीक है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो प्राइसिंग और रेवेन्यू उसको रेवेन्यू कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा है उसके बाद आप उसका कोर्स ले सकते हो क्योंकि ना लाइक वंस यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि ना मुझे प्राइसिंग और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन में ही जाना है ठीक है उसकी बहुत डिमांड है या मेरी कंपनीज उसको वैल्यूएशन देख रही जैसे लाइक अज्यूम करो कि एक कंपनी कुछ होम अप्लायंसेस बेचती है ठीक है और उसके प्राइसिंग रेवेन्यू में उसको कोई इंसाइट नहीं है कि वो क्या प्राइस पे किस दुकानदार को बेच रही है ठीक है उसके मार्केट में कभी कभार प्राइस कुछ जगहों पे चीजें लोवेस्ट प्राइस हो जा रही है कुछ जगहों पे एक्सपेंसिव प्राइसेस पे जा रही कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ठीक है विच इज एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग इट कैन बी अ गुड थिंग बट क्या बोलते कंपटीशन भी कॉम्पिटेटिव प्राइसेस भी नहीं है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटेटिव प्राइसेस क्या होगा दूसरी बात ये कि अगर आप कभी कभार डिस्काउंट देते हो जैसे ईद के टाइम पे आपने एज्यूम किया आपने 20% डिस्काउंट दिया इज दैट 20% डिस्काउंट ट्रांसलेटिंग इनटू मोर रेवेन्यू या नहीं ठीक है तो उस तरह का एनालिसिस करना होता है कि यार अगर मैं कुछ दुकानदारों को कुछ डिस्काउंट दूं या मैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे बेचूं ठीक है तो कैसे होगा तो लाइक दोज आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी कंपनीज नहीं करती तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थ्रू प्राइसिंग एंड रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन so उसके लिए I think having tools like these would be amazing but then there are a lot of online masters but that requires कि आप किस तरह से उसको पे कर सकते हो ठीक है तो अगर आप ऑनलाइन मास्टर्स के लिए वो कर सकते हो बट उनकी क्लासेस आपको वेरी डायरेक्टली इजीली अवेलेबल हैं सो दिस इज अनदर थिंग यू कैन डू दुनिया के बेस्ट मास्टर्स प्रोग्राम देखो जैसे मेरा क्वींस में है ठीक है मैंने क्वींस से मास्टर्स इन मैनेजमेंट एनालिटिक्स किया था ठीक है उसका प्रोग्राम देखो उसका करिकुलम देखो और उसकी करिकुलम में जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके इंटरेस्ट हो ठीक है उसकी आप कोर्सेज देखो आपको ऑनलाइन इतने कोर्सेज मिलेंगे जो उससे रेलिवेंट होंगे ठीक है चाहे खान एकेडमी पे हो चाहे कोर्सेरा पे हो ठीक है गो एंड लर्न दोस कोर्सेज ठीक है एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज जो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है कि किस तरह से आप उनको अप्लाई करो क्योंकि उन कोर्सेज के अंदर वो आपको एप्लीकेशन बताते हैं कि आप किस तरह से प्राइसिंग एंड रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरीज अप्लाई करो या मार्केट एनालिटिक्स करो या मार्केटिंग एनालिटिक्स या क्लस्टरिंग मॉडल्स करो कि क्लस्टरिंग को कैसे लाइक यू आप घर पे कोडिंग करके क्लस्टरिंग मॉडल तो सीख लोगे बट कैसे अप्लाई करना है दैट्स हाउ यू विल लर्न के ना भाई कोई कोर्स या प्रोफेसर को जब आप पढ़ाते हुए देखोगे कि उसने किस तरह से अप्लाई किया दैट्स हाउ यू वुड डू बट इजियर थिंग इज कि आप जैसे हार्वर्ड का MBA हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का एनालिटिक्स का प्रोग्राम हो चाहे MIT का हो या कोलंबिया का हो जो भी गो लुक एट द कोर्स स्लॉट के वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं ठीक है और फिर वही कोर्सेज आपको एग्जैक्टली खान अकेडमी या उधर कोर्सेरा में इजीली मिल जाएंगे एंड आई थिंक दैट्स एन ईजियर वे टू डू इट ताकि आपको पता हो कि आप कि वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन क्या है और एट द सेम टाइम हाउ डू यू अप्लाई दैट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इनटू योर डे टू डे वर्क Rahim, I hope I answered your Yeah. question. Yes, you are very right, and thank you so much for detailed answering. Now I would like to request if any of the participant have question, so you can unmute yourself one by one and ask the question directly from QAHIR. And QAHIR, we have some questions in the chat window as well. Okay, so maybe do you think we should start with those? Yes. Okay, so Hello, QAHIR. This is Shumail. yes, hi, Hello, how are you? I'm good. How are you? Great, great. So, QAHIR, first of all, thank you very much for your time and effort. So, basically, my question is that it's connected with the Rahim, which is just a question about the COVID.
because of the COVID, the earning capacity has been, come down of the people. Mm-hmm. So in this situation, you are focusing on the making a price stream, so the vendor may have the idea about on which price they will, sell the product. But the situation is this, that the earning capacity or the buying capacity of the buyer has come down. So Yeah, in this situation, how this analytical business, or the data science will help, to target a particular audience who have the the actual earning, who can still buying, because of the country like Pakistan. It's not a developed country, it's a developing country, and yeah, we as a Pakistan has a lot of issues as far as the earning, per capita income is very low in the Pakistan. So definitely. yeah. So, there are two things. देखो एक देखो दो काइंड ऑफ इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आप ये बोलते हो ना, जब कोविड-19 और इस तरह की चीजें हिट करती हैं, लाइक इस तरह के पैंडेमिक्स हिट करते हैं, कोई डिजास्टर होता है, तो देयर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि लोग है ना इतना स्टोर्स पे जाते नहीं है, शॉपिंग नहीं करते। ठीक है, तो वो ऑनलाइन, मतलब उनके दे मे हैव मनी, बट उनको शायद ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। ठीक है, बट दे मे नॉट हैव मच कैपेसिटी इन द स्टोर। तो वन थिंग इज, यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट चैनल्स थ्रू विच यू कैन मार्केट थिंग्स। ठीक है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। जब आप ऑल्टरनेट चैनल्स के थ्रू मार्केटिंग करो, जैसे कि ना अगर आपका एक खाली स्टोर टू स्टोर था, अब आप डिजिटल चले गए हो, ठीक है, यू आर गोइंग इन डिफरेंट एरियाज, दैट्स वन वे टू सेल योर प्रोडक्ट, और वहां पे आपकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि एक कभी कभार क्या होता है कि आप एक फिजिकल स्टोर पे जब बेच रहे होते हो, तो आप एक जोग्राफिकल एरिया से भी रिस्ट्रिक्टेड होते हो। ठीक है, कि आप मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं है, या आपकी सप्लाई चेन नहीं है। लेकिन जब आप डिजिटल जाते हो तो आपकी सप्लाई चेन वो सब आपको पूरा वो करना पड़ता है, नेशनली लेके जाना होता है। So that's one thing you can do. Secondly, then you can also, जब आप डिजिटल जाते हो तो you can also export outside of Pakistan as well. ठीक है, आपका आपके पास you can sell in United States, you can sell in Canada, you can sell in UAE, मतलब आपके आपकी थोड़ी स्कोप बढ़ जाती है। You need to think outside of the box in that area. जहाँ पे एनालिटिक्स की बात आती है, इस तरह की जगहों पे अप्लाई करने के लिए एनालिटिक्स प्लेज अ बिग रोल। बिकॉज जब आप बास्केट एनालिसिस करते हो, ठीक है, आपको पता, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है बास्केट एनालिसिस के नाम से, जिससे आपको पता चलता है कि जब लोग स्टोर में आते हैं खरीदने के लिए चीजें, ठीक है, तो वो क्या चीजें एक साथ खरीदते हैं। जैसे कि ना यूएस के अंदर एक बहुत फेमस एग्जांपल थी टारगेट की, आई थिंक। दे रियलाइज के लोग एवरी थर्सडे को डायपर्स लेने के लिए आते हैं टारगेट के अंदर, तो वो एक बियर की 6 बॉटल्स लेके साथ में जाते हैं। सो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने डायपर्स और बियर की बॉटल बराबर में रखना स्टार्ट कर दी, उनकी सेल्स ऊपर चलेंगी। ठीक है, तो लाइक यू, दिस इज काइंड ऑफ एनालिसिस दैट यू डू। फिर एक एग्जांपल थी जो कि एक्चुअली प्राइवेसी रिलेटेड थी, और जो इतनी अच्छी थी। लोगों के घर पे यहाँ पे फ्लायर्स आते हैं बहुत, कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर। आई थिंक पाकिस्तान में इतने नहीं आते, बट यहाँ पे ना फ्लायर्स आते हैं, लाइक लोगों के परचेजिंग हैबिट्स पे। अज्यूम करो कि आपको पता है कि यार कुछ लोग आते हैं और बस उनके आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, या आपने कोई लॉयल्टी कार्ड रखा है जिससे आपको पता है कि यार ये सारी चीजें आती है, तो आप उनके घर पे स्पेसिफिक फ्लायर्स भेजते हो। तो व्हाट दे फाइंड आउट वाज कि ना एक किसी की बेटी थी जो 14 इयर्स की थी, अनफॉर्चुनेटली, और वो उसके जो स्पेंडिंग पैटर्न्स थे, दे वर एक्विंग लाइक अ प्रेग्नेंट लेडीज लाइक स्पेंडिंग पैटर्न्स। तो उन्होंने उसके घर पे एक प्रेग्नेंट लाइक लेडीज के लिए जो स्पेसिफिक होता है ना ब्रोशर, वो उन्होंने बेच दिया। ठीक है, और उसके पेरेंट्स बड़े गर्म हो गए थे, और लाइक दे गॉट रियली एंग्री, और उसमें बहुत मीडिया केस भी हुआ था कि ना उन्होंने वो कि ना लाइक बेसिकली द टारगेट का जो वो परचेजिंग एनालिस्ट था, ठीक है, या जो मतलब जो ये फ्लायर्स बेचा था, उसको पहले पता चल गया कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, बचाएगी उसकी बेटी को या उसकी फैमिली को, एंड शी वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट। लाइक दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल जहाँ पे ना लाइक आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप फिगर आउट कर सकते हो उनके पैटर्न्स लेके, आप उनको क्या ऑफर्स बेचो या क्या चीजें ऐसी बेचो एनालिटिक्स वाइज, जिससे आपकी सेल्स इंप्रूव हो। एक चीज और भी है कि कोविड-19 के जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ना आप अपनी नीड्स ज्यादा लेते हो, जैसे दाल चावल और सारी चीजें आप ज्यादा लोगे कंपेयर टू व्हाट यू वांट। ठीक है, लाइक जैसे सेल फोन्स वगैरह जो है वो आप कम यूज करते हो या कम लेते हो। ठीक है, और दाल चावल और सारी चीजें ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होती है, जो खाने की, मीट हो गया। ठीक है, तो वो उस पर आप नीड्स से ज्यादा वो करते हो, और फिर जब बजट्स कम हो जाते हैं तो आप डिफरेंट चीजें होती हैं। तो फिर एक और चीज है कि आप अपने आप को किस तरह से बिजनेस वाइज आप अपने आप को डाइवर्ट करो, सो दैट यू कैन मेक मोर मनी फ्रॉम दैट। सो आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Sounds great. Thanks, Shama. By the way, that Uh, was an excellent question. Sorry, Tahir, yeah. Yeah.
Kahir, thanks a lot for very thought-provoking and enlightening session. I actually am trying to move to the data science field from, although I'm associated with investment banking since last 20 years. My question is that am I too old to get into the data science field now? And secondly, what should be done to turn my story into a success story? I know that I have to take an extra mile now because. And my other question is that in Canada, because I'm probably going to land in Canada permanently, maybe next year. So ageism, does it matter over there, or like is it considered as a major kind of a catalyst in hiring? So is this Adil? I think so. So I'm assuming this was Adil. So Yeah. Adil, so first of all, it all can be like age and all the issues, or like when you're basically getting into analytics and data science, is all in your kind of it all depends on what's in your mind. Like if you can think of yourself as like somebody who can do everything, who knows your data science analytics really well, like if you know your subject matter really well, then I don't think anybody can stop you. Because sometimes your experience can actually help you, because like if assuming that you come into investment banking, investment banking में आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो are really good in investment banking, at the same time they know really good analytics, who can actually work out ratios and everything, and think about the success of a company and everything in a different way. So Sure. you'll find a very few people in that area. So I would say analytics is something, no matter which field or industry you are in, you can benefit off, as far as you like, how you can play it well. तो उसके लिए, you need to kind of work hard. You need to come in here and network with a lot of people जो इस तरह की fields में जो बहुत unique लोग हो, investment analytics के अंदर, or something like that, या फिर investment banking के अंदर और analytics के अंदर, उनसे जाके मिलो, ठीक है, learn about how they are doing their works, learn about what qualifications they did, if they did any qualifications, उन्होंने कोई certifications लिए हैं क्या क्या, ठीक है, फिर see if they can hire you in some kind of a junior position, ठीक है. Don't, if you think your age is like an issue, that's your mental thinking, or that can work against you. So the more proactive you are, and the more you're reaching out to people, the more networking you're doing, you'll be okay. Like it's just upon how much you can drive your career, because usually look, the ageism में issue ये होता है कि लोग, young लोग होते हैं ना, उनके energy बहुत ज़्यादा होती है, so they're not afraid to like make mistakes. They're not afraid to like like kind of be like cautious about कि अगर वो mistakes कर रहे हैं something, ठीक है, old लोग ज़्यादा cautious हो जाते हैं. But if you don't really care about it and you think like a young person, then you'll be okay. Like, nobody can challenge you. So you have to just think. I think it's more about mindset. So you have to just make sure, okay, don't worry about your age, don't think about your age. Think you have that energy of a young person and you can do anything. And then, go and network with as many people as you can, learn about what they are doing well, so that you can apply the same thing. Thanks a lot. Thanks a lot. No problem. That makes sense. Yeah, कोई मसला नहीं. कोई और questions हैं? उससे पहले मैं chat के questions हो जाऊं. Yes, we can proceed to the chat questions. Yeah. Okay, perfect. So I think Shumail का मैंने question answer कर दिया है. Adil, I think I answered your question as well. Specialization financial analytics. Okay, so a question for Hana ka hai, I think. Sometimes I get incomplete missing data from an external source like input to analyze trends, but due to incomplete data, how much that trend is reliable is to take any decisions. So for Hana, there are a lot of statistical techniques like just get through and up missing data ko fill kar sakte ho. I think there are 2 or 3 different statistical models जिसमें आप क्या कहते हो कि अगर आपके पास missing data हो, so what you can do is you can take averages of like remaining part of the data, ठीक है, या फिर आप उसको randomly fill कर सकते हो through various randomizers उस missing data को, depending on उसका scale क्या है. The other thing is कि you can remove those data points जहाँ पे missing data आ रहा है,
and you based on those kind of things, जो different statistical techniques होती हैं, and sometimes you may have to remove some variables, like अगर वो बहुत ज्यादा मिसिंग है तो आप उसको रिमूव कर दो. एक और चीज ये कर सकते हो, जैसे कि आप कभी कभार उस डेटा को आप ज्यादा वो कर सकते हो, enhance कर सकते हो. जैसे कि one of the examples would be कि you need to find out all the people who are between age 50 and 55. ठीक है, और आपके पास एज की फील्ड अवेलेबल है, तो what you would do is you would do one and zeros, like कि हर बंदा जो 50 या 55 की ब्रैकेट में आता है, आप उसमें if then स्टेटमेंट बना दो और वहाँ पे वन और जीरोस के साथ प्लग कर दो, तो उस बार आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. And there are all these, you can use all these techniques. I think factor analysis is also one of the techniques जो आप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप missing data को fill कर सकते हो. And I think that's one way you can fill out all that data है. And then once you have all the, जब आप वो data को fill कर लो, then you can make some analysis on that. But the Markov chain is also another way through, just through randomly data को populate कर सकते हो. But again, those are all randomization depending के कितना data missing है. Like if it's 75% आपका data है and 25% is missing, it's good to use those kind of data. अगर आपका 25% data or 75% missing है, then I don't think the data is that good to use. So maybe remove that fields and बाकी जो fields इसमें ज़्यादा data populated हो उसका analyze किया जाए. So I think that's how, I hope Farhan, I answered your question. If you are still online, let me know. Okay, so the next question we have is, which type of soft skills can be helpful to sustain in RMG sector after Corona pandemic? Rahim, do you know, or Zubair, can you tell me what RMG sector is? I think there are different ways to analyze that RMG sectors, but who has asked this question? It's Zubair Alam. Okay, so he is asking not about the technical side, he's asking about the soft skills, right? Yeah, he's asking soft skills can be helped to sustain in RMG sector. I'm not exactly sure. I'm assuming it's retail and manufacturing sector. I don't know. Zubair, feel free to speak up if you're there. But basically, soft skills are communication. I think the biggest soft skill that people lack are communication skills. I've noticed कि मैं काफी लोग मेरी जो मेरी जॉब पर होते हैं, different जगहों पर होते हैं, like they do not know how to communicate to different people. They can get technical skills amazing होते हैं, but वो business के साथ communicate नहीं कर सकते, उनके problem solve नहीं कर सकते, उनको एक extra insight, जब आपको कोई data pull करने को बोले, it's always a good idea that you find something more insightful and find something that's more exciting जो उनको नहीं पता, and then tell them in a very exciting storytelling manner, just a sales pitch there. And I think that's something that really helps. So those are soft skills that I find them missing a lot. So I think rest are more like comments. Currently I'm using Tableau for data analysis, but so many BI tools are coming in market. Is it very difficult to be trained in all? So how to tackle this situation and make myself stable in the market, because every organization have different BI tools. So if I think this is again a question by Farhana. So Farhana, I think one thing that you want to do is go and talk to the organization that you're looking to get into. हर organization की different philosophy होती है. कुछ लोग Power BI पे होते हैं, कुछ लोग Tableau पे होते हैं, कुछ लोग Pentaho में होते हैं, कुछ लोग ClickView में होते हैं, और भी SAS visual analyzer है उसमें भी होते हैं. ठीक है, तो understand what they are. Most of the tools are not that difficult. More or less they operate the same way. और हर टूल के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी टू लर्न. ठीक है, वेरी लाइकली जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मेरे ऑफिस में पावर बीआई यूज होता है. आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट पावर बीआई, ठीक है, बट आई एम प्रीटी मच 110% sure that I can Google anything and I'll find the answer of what I'm looking to do in Power BI, which may be a little complicated. And I eventually figure it out. As far as कि आप अपने डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, चाहे एक्सेल पे करो, सीक्वल पे करो, चाहे किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे करो, and then you can put that into a visualization. And then you can, it doesn't matter which tool it is, whether it's Tableau, Power BI, or anything, you can do it. So as far as you have one or two tools written on your resume, but I would say that before you apply to that company, talk to them, आप लोग कौन सा tool use करते हो, and then see if you can learn that tool online and then put that in your resume, because that would help you more to be more successful. But you don't need to be learning all the tools. One or two that you need more in your day-to-day work is more important. It's just when you're making career changes, that's where you need that.
I think that's the next question is from Adil, and which I've already answered about investment banking, and there's next from Rashid Ali Aslam. In audit, how do we use analytics? Okay, so in reality, audit is one thing that is upcoming and using analytics pretty much daily. मैंने यहाँ पे नोटिस किया जो चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो डे टू डे एनालिटिक्स के ना वो यूज कर रहे हैं, मतलब टूल्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके हर डेटा nowadays that documented होता है, आपके systems होते हैं, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं स्टफ, उसमें हर डेटा डॉक्यूमेंटेड होता है. तो व्हाट यू कैन डू इज के ना आप उसमें एनालिटिकल मॉडल्स यूज कर सकते हो, जैसे हमने एक आउटलायर मॉडल के बारे में बताया था, ठीक है, तो वो आउटलायर मॉडल से आप चेक फिगर आउट कर सकते हो कौन सी ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, वो आपको ज्यादा वियर्ड लगती है, बजाय कि आप हर ट्रांजेक्शन को रिव्यू करो, ठीक है. समटाइम्स यू कैन एक्चुअली पिन पॉइंट के ना यार वो किस तरह से वो ट्रांजेक्शन, ये 6 ट्रांजेक्शन है, यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स और आउटलायर डिटेक्शन मॉडल्स, ठीक है, जिसमें आपको ट्रेन करनी होंगी कि लाइक हाउ आर दीज मॉडल्स, हाउ आर दीज ट्रांजेक्शंस outliers, or these are the transactions that I need to investigate more, ताकि आपको the amount of time you spend in like analyzing all the transactions may not be worth it, but analyzing couple of transactions are more worth it. So I think that's how you're using it in audit analytics. Also, आजकल हर चीज की audit trail होती है कि किस बंदे ने system में क्या changes करी, क्या, so you can actually look into those kind of things as well, understand कि क्या audit trails को आपको identify करना हो तो वो ज़्यादा easy हो गया आजकल. So I think that's another thing जो आप कर सकते हो. The last question is, please discuss about Pareto Principle. How can I use Pareto Principle to analyze data? So Pareto Principle is pretty much like, everything else is being equal. आप एक certain assumptions देते हो and then everything else is equal. Basically, you do everything based on those assumptions, hoping that everything else is going to be, same or it won't matter to your analysis. So Pareto Principle is, it's like, it all depends कि आप किस तरह से use करना चाहते हो अपने analysis के अंदर. When you're doing analysis, you want to do it at one point in time. Of course, there's going to be a little bit of a discrepancies, but you always want to stick to one point in time analysis. Hoping that everything goes well. If you take this decision at this point in time, you'll be okay. ठीक है, और उसके बाद जाहिर assumptions will change, things will change, but आपको एक certain set of assumptions लेनी पड़ती हैं कि ना, जैसे COVID-19 का assumption अगर आप ले रहे हो तो आप assume ये करोगे COVID-19, अगर कोई आप अपनी supply chain में कुछ inventory order कर रहे हो और आपने अचानक से realize किया कि ना I need to order 50,000 toothpaste for next 6 months, ठीक है, अब यूजुअली आपकी टूथपेस्ट की डिमांड इतनी नहीं थी या जो भी था, मतलब टूथपेस्ट वुडंट बी अ गुड एग्जांपल, बट अज्यूम करो लाइक फॉर कनाडा की मैं एग्जांपल दूंगा वीट की, लोग यहाँ पे घर पे इतना आटा नहीं बना देते, ठीक है, या ना ही इतनी चपातियां बना देते, ना ही इतनी बेकिंग करते थे. अचानक से वीट की डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है, और इतनी बढ़ गई है कि आप ग्रोसरी स्टोर से जाओगे तो आपको वीट के शेल्फ पे खाली मिलेगा आपको. तो अब नाउ द क्वेश्चन इज के ना, अगर मैं हर नेक्स्ट 6 महीने के लिए वीट अच्छा खासा ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ, और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ना नेक्स्ट 6 महीने में कोविड एग्जिस्ट करेगा और लोग वीट पे कुछ ना कुछ बेकिंग करते रहेंगे, तो इसलिए मैं उसके लिए उसकी जो डिमांड है उसकी वजह से मैं इतना हैवी ऑर्डर कर रहा हूँ. तो दैट्स योर परेटो प्रिंसिपल. बट द थिंग इज के व्हाट इफ इन नेक्स्ट 3 months पैंडेमिक ओवर हो जाए, वैक्सीन आ जाए एंड पीपल आर बैक टू वर्क एंड कोई भी वीट को नहीं बना रहा, तो वो जाहिर है that's an assumption that you don't know, but you're hoping that that assumption holds true, and you're making a decision based on that. So I'm hoping that I answered your question based on that. Raheem, I think I answered all the questions. Do you have any other questions or any comments or anything? No, just I want to like to thank you for your time for our community. So thank you so much, Kahir. And it was been a very detailed and thoughtful session for us as well, and we learn a lot from your experience, and hoping that we would like to invite you again near soon. So I would like to thank all the participants who joined today, and the recording of the session will be available shortly in your inbox. Thank you so much. Thank you, Kahir, again. Thank you so much for joining us. Thank you, Raheem, for inviting me. I look forward to coming again. And if there are any questions or anything, please reach out to me. I'll be more than happy to answer. And you can always add me on LinkedIn. Thank you, everyone.